of what are the segments that we are going to cover in this course. Let us first discuss them one by one. Now, first we'll delve into the revolutionary concept. Why do I call it revolutionary concept? This, you will come to know as we proceed. So first of all, what we are going to discuss, what we will be covering, that is basically the quantum speed reading. This is going to be our segment number 1 of this course. And this is not only about reading faster. ये सिर्फ ये नहीं है कि आपको fast read कैसे करना है. This is basically the way to change जैसे हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन. सो वी विल बी वर्किंग टुगेदर ऑन हाउ आवर ब्रेन प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन. अभी कैसा होता है, या फिर द स्टूडेंट्स दैट यू आर गोइंग टू टीच आफ्टर दिस कोर्स. तो अभी व्हाट इज द करंट थिंग व्हिच इज हैपनिंग विद देम एंड हाउ वी आर गोइंग टू चेंज इट, राइट? Next, we'll move into fast note taking. That is going to be our segment number 2. Why do we should learn these techniques? हमें ये चीज क्यों सीखनी है? हम सीधा मेमोरी पे why can't I switch? First of all, जब भी मुझे किसी चीज के ऊपर if I want to apply any memory technique, what is my first step? I need to read it. Second, I need to extract important information out of that. So which is my second segment, that is the fast note taking. Now, it is not always enough, to just transcribe the information. We need strategies that how I can transcribe, how I can extract important information from whatever text I am having. So there we need our segment number 2, which is the fast note taking. Segment number 3, all of you might be eager ke ye kya segment hoga, which is our memory techniques. This is going to be our third segment in this course. These are not just basically the theoretical techniques, but these are going to be powerful result-oriented memory techniques that are basically enhancing the brain's ability. Brain की ability को ये techniques क्या करती है? Enhance करती है, so that it can effectively store the information. Information storage is effective as well as retrieval is also effective. So these are basically the 3 segments. Now, before moving ahead, I just want all of you to revisit a question, because it is really the heart of why I am, with you today. So I ask one question to all of you: how many times you have felt this situation, या फिर अभी आपने experience किया हो during your studies, या फिर practically कभी भी experience किया हो, that you remember absolutely nothing. You have read something, you have prepared something so many times, लेकिन हमें क्या होता है, एंड में जाके कुछ भी याद नहीं रहता. स्टडीज को हमने आवर्स डेडिकेट किए होते हैं, बट व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट मॉर्निंग? वी फॉरगेट. आई होप ये सबने एक्सपीरियंस किया होगा समहाउ, राइट? इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग. और जिन स्टूडेंट्स को आप आगे जाके पढ़ाओगे, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ ऑल्सो. So therefore, अब ये जो sheer effort है, the valuable time as well as the dedication that you have, put in for the learning process. So this is quite disheartening when this situation arises, that you have read something multiple times, I would say. You have devoted hours to it, but still हम क्या करते हैं उस चीज को अगले दिन we are unable to remember it. We forget that thing. Now, but here I am just going to tell you, ऐसा first thing we need to understand, this is not somebody's intelligence. This has to do nothing with the intelligence of the student, intelligence of the person. This is basically जो चीज उसमें lagging है, that is the strategy, the correct way to study. We as human beings, we have incredibly, I would say, we have, powerful brain. हमारा जो brain है, that is incredibly powerful. हम प्रोसेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, बट ओनली कब कर सकते हैं? इफ द अप्रोच इज राइट. नाउ, ये जो गैप है, वेयर आर ब्रेन्स और वेयर द स्टूडेंट्स ब्रेन इज टुडे एंड वेयर इट मस्ट बी, दिस कोर्स इज द ब्रिज टुवर्ड्स दैट. ये उसका ब्रिज होगा. नाउ, इफ लेट्स सपोज आई टॉक अबाउट सेगमेंट नंबर 1, दैट इज द ब्रेन इज नॉट अ बुक रीडर. आवर ब्रेन इज एक्चुअली नॉट अ बुक रीडर. ये जो सबसे बड़ी चीज है कि यस, when it comes to reading, कि हमारा brain तो already it is in the state of reading something, but it is not so. What is the actual reality? Now, what happens is, अगर मैं अपने brain की बात करूँ, so there is a visual cortex. This is a part of brain. ये हमारे brain का part है, जिसको हम क्या कहते हैं? Visual cortex.
विजुअल कॉर्टेक्स इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कैन एब्सॉर्ब द इमेजेस. कितनी स्पीड से? लेट अस सपोज एक तरफ मेरे पास टेक्स्ट है, दूसरी तरफ मेरे पास क्या है? इमेजेस है. अब जो टेक्स्ट की स्पीड है उससे जो इमेजेस को स्टोर करने की हमारे ब्रेन की स्पीड है, दैट इज 60,000 टाइम्स मोर. इट इज 60,000 टाइम्स द स्पीड ऑफ द टेक्स्ट. नाउ दिस इज अ स्टैगरिंग डिफरेंस. ये बड़ा ही बहुत ज्यादा, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस. नाउ व्हेन यू ग्लैंस एट अ फोटोग्राफ, हम किसी भी फोटोग्राफ को जब भी देखते हैं हम इंस्टेंटली उसको अपने माइंड में सेव कर लेते हैं. यू लुक एट द फोटोग्राफ, क्लोज योर आईज, व्हाट हैपेंस? दैट फोटोग्राफ विल बी इन योर माइंड. द इमोशन, द कॉन्टेक्स्ट, एवरीथिंग विल बी इन योर माइंड. आप चाहे इस फोटो को देखो, यू लुक एट दिस और यू लुक एट दिस, दैट विल बी क्विकली सेव्ड इन योर माइंड. बट होता क्या है? वी आर नॉट रीडिंग द फोटोग्राफ. हम जो फोटोग्राफ है उसको क्या है? रीड नहीं कर रहे हैं. आवर ब्रेन इज कैप्चरिंग द पिक्चर ऑफ दैट. So this is because when you look at the full page, जब आप पूरा पेज देखते हो without losing the focus, उसके ऊपर फोकस लूज नहीं करते हो, you go from word to word, तो हमारी जो peripheral vision होती है that basically takes the information in blocks. This is the important concept when it comes to reading. जब भी हम रीडिंग की बात करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक रोल आता है, आई एम अंडरलाइनिंग ऑल्सो, दिस इज द रोल ऑफ द पेरिफेरल विजन. नाउ पेरिफेरल विजन का क्या रोल होता है? जो भी मेरे सामने टेक्स्ट है, वॉट एवर टेक्स्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू, उस पे वर्ड्स है. देर इज अ पेज ऑफ द बुक, मान लेते हैं बुक का कोई पेज है, उस पे there are written certain words. So my peripheral vision will take in the information in blocks. Now your eyes are never designed, हमारी सबकी जो eyes है, they are not designed just to move in a straight line. जब भी कोई हम रीड करने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू रीड सम टेक्स्ट, वी ट्राई टू रीड सम आर्टिकल, एनीथिंग, व्हाट इज आवर टेंडेंसी? आवर टेंडेंसी इज कि हम उसको सीधा सीधा रीड करते हैं. वी रीड लाइन टू लाइन, बट और उसी से हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में ये चीज बन चुकी है दैट आईज ऑलवेज स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस देन गोइंग अहेड टू द फुल स्टॉप, फिर अगला सेंटेंस, फिर अगला सेंटेंस, राइट? But what is the actual reality? Our eyes are not designed just to move in a straight line, word to word. हमारी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है ह्यूमन बीइंग्स की, ऑफ आवर आईज टू जंप विद द चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसको हम रीडिंग नहीं कहते. दिस वी विल स्टडी फर्दर ऑल्सो. एंड उससे भी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है? एट द सेम टाइम हमारे ब्रेन में वेन एवर वी ट्राई टू रीड समथिंग, एक वेव्स एक्टिवेट होती हैं जिन्हें हम कहते हैं थीटा वेव्स. हमारा नेक्स्ट सेशन इसी के ऊपर होने वाला है, विच वी कॉल एज थीटा वेव्स. whenever we try to read something in an appropriate setup, what is that appropriate setup? We'll study in the next session. हमारे ब्रेन में थीटा वेव्स जो होती है, ये कौन सी वेव्स होती है? ये हमेशा तब ही क्रिएट होती है whenever we are doing something creative. whenever we are doing something creative, हम कुछ भी क्रिएटिव करना चाहते हैं, we meditate. Meditation is the best state. जब भी you meditate, then what happens? Theta waves are activated in our brain. और जब भी हम कोई भी सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग करते हैं, वी वांट टू एब्जॉर्ब सम इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी से, वी वांट टू ट्रांसफर इट टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, देन ऑल्सो दिस थीटा वेव्स आर एक्टिवेटेड. So when our brain is relaxed, जब भी हमारा brain relaxed होता है, that is always in the open state. Whenever there is relaxation in our brain, what happens is हमारा brain क्या होता है? It has the incredible receptivity. What is receptivity? Means my brain is receptive to absorb vast amount of information. बहुत ज़्यादा information अगर मुझे store करनी है, I can do that. So therefore, this segment number 1 is all about enhancing the reading capabilities. Now the power of synergy, leveraging the visual, जिसको हम अभी क्या कहते हैं, that is called the quantum speed reading.